Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आगुरुकाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने ये शास्त्र की रचना भगवान की वाणी सुनकर और आत्मा के अनुभव पूर्वक रचना की है। ये शास्त्र वर्तमान में जितने शास्त्र है उसमें सर्वोत्कृष्ट शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके समयसार यानी त्रिकाल शुद्धात्मा दर्शाने के लिए प्रतिज्ञा की है। त्रिकाल शुद्धात्मा इसलिए दर्शाया कि हम सब अज्ञानी ने आज तक आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को यानी समयसार स्वरूप जीव के स्वभाव को दृष्टि में लिया नहीं। जब तक स्वभाव दृष्टि नहीं होती है तब तक धर्म यानी मोक्ष मार्ग प्रकट सकता नहीं है। ऐसे समयसार शास्त्र में आचार्य भगवान ने प्रथम अधिकार जीव अजीव अधिकार की रचना की है। जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवान जीव और अजीव का स्वरूप दिखाकर अजीव का लक्ष्य छुड़ाकर जीव के शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करा के
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट कराना चाहते हैं। ऐसे जीव जीव अधिकार की 50 से 55 गाथा की टीका चलती है। टीकाकार आचार्य ने 29 प्रकार से अजीव का स्वरूप बताया। ये 29 प्रकार है तो अजीव का, लेकिन अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, विपरीत मान्यता वाला जीव अजीव को जीव मानता है। अजीव को जीव मानने से मिथ्यात्व दृढ़ होता है। अजीव का 29 प्रकार बता के वो 29 से 29 प्रकार का लक्ष्य छुड़ाकर जीव के स्वभाव का लक्ष्य कराकर आचार्य भगवान मोक्ष मार्ग प्रकट कराना चाहते हैं। ये 29 प्रकार जो अजीव का है, उसमें 27वां प्रकार परमाय है। 27 में पेज नंबर 108 उसकी लास्ट लाइन है और लास्ट शब्द से शुरू होता है। चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसा जो संयम लब्धि स्थानों वो सब जीव में यानी जीव के स्वभाव में नहीं। क्या कहा? मोह का 2 प्रकार है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह उसका उदय में जुड़ने से जीव मिथ्यात्व को उत्पन्न करता है और चारित्र मोह के उदय से, उसमें जुड़ने से जीव की दशा में चारित्र का दोष उत्पन्न होता है। यहाँ दर्शन मोह का विषय नहीं है, यहाँ चारित्र मोह का विषय है। चारित्र मोहनी कर्म उसका उदय को निमित्त बनाकर जीव को चारित्र की जो शुद्धता है वो चारित्र की शुद्धता का घात होता है। तो यहाँ बताया
चारित्र मोह का विपाक, चारित्र मोह का उदय आया तो उसका फल, तो कि उसका फल है क्रमशः क्रमशः शब्द क्यों लिखा? तो कि सबसे पहले चारित्र गुण समझना चाहिए। बाद में क्रमशः का अर्थ समझ में आएगा। चारित्र नाम का गुण आत्मा का गुण है। चारित्र गुण होने के कारण उसका परिणमन भी होता है। उसका परिणमन में अशुद्ध परिणमन उत्पन्न होता है तो अविरति प्रमाद कसाई उत्पन्न होता है, या तो कसाई नो कसाई उत्पन्न होता है, अर्थात राग द्वेष उत्पन्न होता है, क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होता है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, तीन प्रकार के वेद उत्पन्न होते हैं। वो चारित्र की अशुद्ध पर्याय है। चारित्र गुण में जो शुद्धता उत्पन्न होती है, तो चारित्र गुण का स्वभाव ऐसा है कि चारित्र गुण परिपूर्ण शुद्ध एक समय में नहीं हो सकता। चारित्र गुण क्रमशः, यहाँ शब्द है ना क्रमशः, क्रमशः शुद्धता बढ़ती जाती है। शुद्धता बढ़ती जाती है तो चारित्र मोह के विपाक के कारण जो अशुद्धता है वो क्रमशः अशुद्धता का नाश होता जाता है। चारित्र गुण कैसा है? तो कि उसके परिणाम क्रमशः शुद्ध होता है, एक साथ नहीं होता। हमने एक बार दृष्टांत दिया था, फिर से, कि मैकेनिक हो, उसका जो सफाई का कपड़ा हो वो इतना मलिन होता है कि एक बार धुलाई करो तो परिपूर्ण वो शुद्ध नहीं होता, निर्मल नहीं होता। एक बार धुलाई की, दो बार की, तीन बार की और चौथी बार की, तब मलिनता दूर हुई। तो उसकी मलिनता क्रमशः नष्ट हुई और मलिनता के स्थान पर क्रमशः निर्मलता बढ़ती गई। उसी प्रकार यहाँ बताया कि चारित्र मोह का विपाक, यानी चारित्र मोह का फल
चारित्र मोह का फल यानी राग द्वेष सत्ता में उत्पन्न हुआ या क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न हुआ, जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ उसका 4 प्रकार है। अनंतानुबंधी का राग द्वेष, अप्रत्याख्यान का राग द्वेष, प्रत्याख्यान का राग द्वेष, संजुलन का राग द्वेष। प्रथम नाश होगा अनंतानुबंधी का राग द्वेष, उसके बाद अप्रत्याख्यान का राग द्वेष नाश होगा, उसके बाद प्रत्याख्यान का, और उसके बाद संजुलन में प्रथम क्रोध जाएगा, बाद में मान, बाद में माया, बाद में लोभ। तो चारित्र मोह के विपाक के कारण जो अशुद्धता उत्पन्न हुई, वो अशुद्धता क्रमशः नाश होती है और शुद्धता बढ़ती जाती है। ऐसा जिसका लक्षण है क्रमशः राग द्वेष का नाश हो और क्रमशः शुद्धता बढ़ती जाती हो, ऐसा जिसका लक्षण है, ऐसे जो संयम लब्धि के स्थानों, संयम लब्धि वो चारित्र गुण की पर्याय है। आंशिक शुद्ध पर्याय, बाद में शुद्धि की वृद्धि क्रमशः, और एक समय ऐसा आता है कि परिपूर्ण शुद्धता प्रकटती है। तो ऐसे जो चारित्र गुण की चारित्र मोह के कारण, चारित्र मोह के विपाक के कारण जो अशुद्धि का भेद होता है, उसकी बात यहाँ नहीं करनी है। संयम लब्धि स्थान में शुद्ध परिणाम लेना है, चाहे वो आंशिक शुद्ध हो कि शुद्धि की वृद्धि हो कि पूर्ण शुद्धता हो। तो यहाँ कहा कि चारित्र मोह के विपाक क्रमशः निवृत्ति એટલે નાશ, क्रमशः नाश जिसका लक्षण है, जिसका यानी संयम लब्धि का लक्षण है। तो यहाँ बताया चारित्र गुण की शुद्धता का भेद। चौथे गुणस्थान पर शुद्धता कैसी है, पंचम गुणस्थान में शुद्धता कैसी है, छठे सातवें गुणस्थान में शुद्धता कैसी है। तो कि क्रमशः गुणस्थान बढ़ता जाता है, उसका अर्थ कि चारित्र मोह का विपाक क्रमशः निवृत्त होता जाता है
आंशिक शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि बढ़ती जाती है, उसको संयम लब्धि स्थान कहने में आता है। तो चारित्र गुण की शुद्धता और शुद्धि की बढ़ोतरी तो वो तो चारित्र गुण की आंशिक शुद्धि से शुरू करके पूर्ण शुद्धता तक वृद्धि का भेद तो अनंत प्रकार का है। क्यों? तो कि प्रति समय ज्ञानी मोक्ष से नजदीक जाता है। प्रति समय ज्ञानी चारित्र मोह के विपाक को क्रमशः निवृत्त करता जाता है। जितना चारित्र मोह की जितनी निवृत्ति हुई इतनी शुद्धि बढ़ी। तो कि ऐसे चारित्र गुण की शुद्धता का जो भेद है वो भेद ज्ञायक स्वभाव में नहीं है। ज्ञायक स्वभाव तो अभेद है। ज्ञायक स्वभाव में तो भेद नहीं होते। उसका अर्थ ये कि चारित्र गुण की जो शुद्धता है उसके परिणाम का जो विध भेद है उसका तू लक्ष्य करेगा तो पर्याय के भेद का लक्ष्य हो गया। और पर्याय के भेदों का तू लक्ष्य करेगा तो विकल्प उत्पन्न होगा। और वो विकल्प तो शुद्धता का घातक है। तुझे चारित्र गुण में कितनी शुद्धता प्रकट हुई वहां दृष्टि नहीं करना है, वहां उपयोग नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? कि चारित्र गुण की शुद्धता वो पर्याय है। भले वो आंशिक शुद्ध हो कि शुद्धि की वृद्धि हो, ये तो पर्याय। पर्याय का लक्ष्य करने से तो विकल्प उत्पन्न होता है, क्योंकि पर्याय भेद रूप है। दूसरा कि जो शुद्धि की वृद्धि होती है, पर्याय में जो शुद्धि की वृद्धि होती है तभी भी ज्ञानी का लक्ष्य आंशिक शुद्ध के शुद्धि की वृद्धि रूप पर्यायों पर उसका लक्ष्य होता नहीं है। उसका लक्ष्य तो ज्ञायक पर है। ज्ञायक में स्थिरता हो गई, ज्ञायक में लवलीन हो गए। ज्ञायक दृष्टि का विषय है। चारित्र के आंशिक शुद्ध के शुद्धि की वृद्धि रूप परिणाम वो दृष्टि का विषय नहीं है। समय सार का हेतु
तो समयसा शास्त्र वो तो दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, लेकिन दृष्टि प्रधान का अर्थ क्या? दृष्टि कहाँ रखनी है? गुण भेद में, पर्याय भेद में, कि अभेद द्रव्य स्वभाव में? तो कि अभेद द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखनी है। अगर तुझे द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखनी है तो पर्याय का लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा। संयम लब्धि के स्थान उसको कहते हैं कि चारित्र मोह क्रमशः निवृत्त होता जाए और चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होती जाए। चारित्र मोह की निवृत्ति वो भी पर्याय है। आंशिक शुद्धि वो भी पर्याय है। शुद्धि की वृद्धि वो भी पर्याय है। चारित्र मोह की निवृत्ति वो भी अनित्य पर्याय है। आंशिक शुद्धि वो भी पर्याय है। शुद्धि की वृद्धि वो भी पर्याय है। चारित्र मोह की निवृत्ति पर्याय होने के कारण, अनित्य होने के कारण, एक समय की होने के कारण, क्षणिक होने के कारण, उत्पादन वाली होने के कारण उसका लक्ष्य हो नहीं सकता। आंशिक शुद्धि वो भी पर्याय है, क्षणिक है, एक समय की है, अनित्य है, उत्पाद वाली है, इसलिए उसका भी ध्यान नहीं हो सकता। शुद्धि की वृद्धि वो भी पर्याय है, एक समय की है, क्षणिक है, अनित्य है, उत्पाद वाली है, तो उसका भी ध्यान नहीं हो सकता। तो संयम लब्धि स्थानों के परिणाम, संयम लब्धि स्थानों की पर्याय हे जीव की पर्याय, लेकिन लक्ष्य करने जैसा नहीं। संयम लब्धि स्थानों में पर्याय की शुद्धता बतानी है, चारित्र गुण के पर्याय की शुद्धता बतानी है। तो जो व्यक्त हुई शुद्धता है, तो व्यक्तता तो वर्तमान पर्याय में हुई, और चारित्र गुण तो ज्ञायक स्वभाव में अभेद है। जब दृष्टि और उपयोग ज्ञायक के सन्मुख करना है, तब संयम लब्धि की पर्यायों को भी गौण करनी पड़ती है, उसका भी लक्ष्य छोड़ना पड़ता है, उसमें से भी उपादेयपणा का त्याग करना पड़ता है।
ख्याल में आता है। फिर से गुजराती में। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. આચાર્ય ભગવાન સમયસાર અર્થાત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માને દર્શાવવા માગે છે. આ શાસ્ત્રમાં આચાર્ય ભગવાન ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માને કેમ દર્શાવે છે? તો કે અનાદિથી આજ દિવસ સુધી આપણે બધા અજ્ઞાનીઓએ આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું સ્વરૂપ સાંભળ્યું નથી, ચિંતન કર્યું નથી, મનન કર્યું નથી અને એનું લક્ષ્ય કરીને સમ્યક દર્શન અર્થાત મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કર્યો નથી. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ શું કામ બતાવે છે? તો કે તારા પરિણામમાં શુદ્ધતા પ્રગટાવી હોય, તારા પરિણામમાં સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવું હોય, તારા પરિણામમાં સંવર નિદ્રાની પ્રગટતા કરવી હોય, તારા પરિણામમાં મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરવો હોય તો તારી વર્તમાન વર્તી પર્યાયે આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ કરી એમાં એકાગ્ર થઈ, એમાં લવલીન થઈ, એમની રુચિ કરી, એનું જ્ઞાન કરી, એમાં રમણતા કરશે તો તને મોક્ષ માર્ગ અને એનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. એવા સમયસાર શાસ્ત્રમાં ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ સિમંદર ભગવાનને સાક્ષીમાં રાખી અને સ્વયંએ અનુભૂતિના કાળે જે જ્ઞાયક પ્રતીત થયો છે, અનુભૂતિના કાળે જે જ્ઞાયકનું જ્ઞાન થયું છે એવી અનુભૂતિપૂર્વક આપણને સમયસારી અને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા દર્શાવે છે. આ સમયસાર શાસ્ત્રનો પ્રથમ અધિકાર જીવ અધિકાર ચાલે છે. જીવ અધિકારમાં જીવનું જેવું છે તેવું યથાર્થ સ્વરૂપ અને અજીવનું જેવું છે તેવું યથાર્થ સ્વરૂપ એનું શ્રદ્ધાન કરાવીને અજીવનું લક્ષ છોડાવીને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ્ય કરાવીને તને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરાવવા માગે છે. એવા જીવ અધિકારમાં 50 થી 55 ગાથા ચાલે છે. આચાર્ય ભગવંતે આ ગાથાઓમાં 29 પ્રકારે અજીવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું.
આ 29 પ્રકાર અજીવના કેમ બતાવ્યા? તો કે આપણે બધા અજ્ઞાની છીએ, મૂઢ છીએ, ઘોર મિથ્યા દ્રષ્ટિ છીએ, આપણી માન્યતા પણ વિપરીત છે, આપણું જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે. ત્યારે આપણે અજ્ઞાનીઓ અજીવના સ્વરૂપને જીવ માની બેઠા છે. અજીવને જીવ માને એ તો વિપરીતતા છે, મિથ્યાત્વનું પોષણ છે, મિથ્યાત્વને દ્રઢ બનાવનારું છે. તો આચાર્ય ભગવાન આ 29 પ્રકારના અજીવ સ્થાનો કે જેને આપણે જીવ માનીને એ અજીવના સ્થાનનું લક્ષ્ય કરીને ત્યાં રોકાઈને ઊભા છીએ. એ અટકનું સ્થાન છે. તો અજીવનું 50 થી 55 ગાથામાં અજીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ, યથાર્થ સ્વરૂપ સમજીને એનું લક્ષ્ય છોડ, જ્ઞાયક સ્વભાવનું ચિંતન કર, મનન કર, રટણ કર, જ્ઞાયક સ્વભાવ પાસે ટેલ નાખ, જ્ઞાયક ફરતો વીંટળાઈને રહે. એ જ્ઞાયકનું ચિંતન મનન કરતા, જ્ઞાયક પાસે ટેલ નાખતા, જ્ઞાયક સ્વભાવને વીંટળાઈને રહેતા તને અજીવનું લક્ષ્ય છૂટી જશે અને જ્ઞાયકનું લક્ષ્ય થઈ જતા સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. એ વાત સમજાવવા માટે ઓગણત્રીસ બોલોમાંથી અજીવના 29 બોલોમાંથી 26 બોલ ચાલ્યા છે. 27મો બોલ પેજ નંબર 108 એની છેલ્લી લીટીનો છેલ્લો શબ્દ ચારિત્ર મોહના વિપાકથી ચારિત્ર મોહનીય નામનું કર્મ છે. એનો વિપાક એટલે જે ચારિત્ર મોહનીયના કર્મ છે એનો અબાધા કાળ પૂરો થાય એટલે એનો ઉદય થાય. વિપાક એટલે સત્તામાં પડેલું કર્મ ઉદયરૂપ થયું. ઉદયરૂપ થયું એટલે કે ફળ આપ્યું કર્મએ. ફળ આપ્યું એમ ત્યારે કહેવાય કે જીવ એમાં જોડાય તો. જીવ જો એમાં જોડાય ચારિત્ર મોહમાં જોડાય તો જીવની સત્તામાં રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થઈ શકે, ક્રોધ માન માયા લોભ ઉત્પન્ન થઈ શકે, હાસ્ય રતિ અરતિ શોકભય જુગુપ્સા અને 3 વેદ ઉત્પન્ન થઈ શકે, અવિરતિ પ્રમાદ કસાય ઉત્પન્ન થઈ શકે. આ બધા ચારિત્રના અશુદ્ધ પરિણામ છે.
એવા ચારિત્રના અશુદ્ધ પરિણામની નિવૃત્તિ ચારિત્ર મોહના પરિણામની નિવૃત્તિ કઈ રીતે થાય છે? ક્રમશઃ. ક્રમશઃ કેમ નિવૃત્તિ થાય છે? તો કે ચારિત્ર ગુણની તાસીર એવી છે કે ક્રમે જ શુદ્ધ થાય. તો ચારિત્ર ગુણની ક્રમશઃ શુદ્ધતા થાય એનો અર્થ એમ કે એની અશુદ્ધતા પણ ક્રમશઃ નાશ પામે. મિકેનિકનું કપડું હોય એટલું મેલું હોય કે એક વખત કપડાને ધોવે તો મેલ બધો નીતરે નહીં, થોડો જાય. તો એક વખત કપડું ધોતા થોડો મેલ ઓછો થયો, બીજી વાર કપડું ધોયું, પાછો મેલ થોડો ઓછો થયો, ત્રીજી વાર ધોયું, પાછું થોડું મેલ નીતરી ગયો, અને ચોથી વાર બધો મેલ નીતરી જતા કપડું નિર્મળ થયું, મલિનતા રહિત થયું. એવી રીતે ચારિત્ર ગુણમાં એની અશુદ્ધ પર્યાય અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ પ્રથમ નાશ પામે. પછી અપ્રત્યાખ્યાનના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એનો નાશ થાય. પછી પ્રત્યાખ્યાનના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ નાશ પામે. પછી સંજોલનના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ નાશ પામે. તો ક્રમશઃ અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સંજોલનના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ક્રમશઃ જે નાશ પામે છે એમાં અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન એ ત્રણેયમાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એક સાથે જાય છે. પેલા અનંતાનુબંધીના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ચારેય નાશ પામે. પછી અપ્રત્યાખ્યાનના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ સાથે નાશ પામે. પછી પ્રત્યાખ્યાનના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ સાથે નાશ પામે. અને પછી સંજોલનમાં પ્રથમ સંજોલનનો ક્રોધ જાય, પછી સંજોલનનો માન જાય, પછી સંજોલનની માયા જાય, અને પછી સંજોલનનો લોભ જાય. આવો ક્રમ પડે છે. એટલે અહીંયા લખ્યું કે ચારિત્ર મોહના ફળની ક્રમશઃ નિવૃત્તિ. વિપાક એટલે ફળ, તો ફળની ક્રમશઃ નિવૃત્તિ. હવે જો કસાય છે, અશુદ્ધતા છે, એ અશુદ્ધતા ક્રમશઃ નાશ પામે, તો એનો અર્થ એમ કે શુદ્ધતા પણ ક્રમે વધતી જાય. એ શુદ્ધતાનું ક્રમમાં વધવું એને સંયમ લબ્ધિ સ્થાન કહેવાય છે. સંયમ લબ્ધિ સ્થાન ચારિત્ર ગુણની શુદ્ધ પર્યાય. હવે એવા શુદ્ધિની વૃદ્ધિવાળા પરિણામ 4 ગુણસ્થાનથી 12મા ગુણસ્થાન અંશ સુધી ચાલે. એના ભેદો પાડવા જાઓ
तो अनेक भेद पड़े। तो આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આ સંયમ લબ્ધિના પરિણામના અનેક ભેદ છે, એ બધાય જીવને નથી, ये सब जीव को नहीं है। जीव को नहीं है उसका अर्थ जीव के स्वभाव में नहीं है। जीव के स्वभाव में नहीं है। क्यों? तो कि जीव का स्वभाव तो अभेद है। वो तो अनंत गुणात्मक अखंड एक सत्ता है। वो तो अनंत धर्मात्मक अखंड एक सत्ता है। वो तो अनंत शक्ति का पिंड अखंड एक स्वभाव है। वो तो ज्ञान दर्शनमय अखंड एक स्वभाव है, अभेद स्वभाव है। वो अभेद स्वभाव भी है और संयम लब्धि का परिणाम भी है। दो में से मुख्य किसको करना है? तो कि संयम लब्धि का जो परिणाम है वो तो क्षणिक है, एक समय का है, अनित्य है, उत्पाद व्यय वाला है। तो जो क्षणिक हो, एक समय का परिणाम हो, अनित्य हो, उत्पाद व्यय वाला हो, उसका तो ध्यान हो नहीं सकता। ये गाथाओं में तो जीव किसको कहना है? आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को। आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को ही जीव क्यों कहा? तो कि तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है तो जीव के गुण भेद के पर्याय भेद का लक्ष्य नहीं करना है, लेकिन तुझे लक्ष्य करना है जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पर। तो जीव का जो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है उसको यहां जीव कहा। और ऐसा जो अखंड परम पारणामिक भाव स्वरूप ध्रुव स्वभाव है, उस पर जब दृष्टि गिरती है और जो ज्ञायक प्रतीत में आता है, वो ज्ञायक ऐसा प्रतीत में आया कि ये ज्ञायक तो अभेद है। ऐसे अभेद का लक्ष्य जब किया तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। तो संयम लब्धि के परिणाम उसका लक्ष्य छुड़ाना है। उसका लक्ष्य करने जाएगा तो विकल्प उत्पन्न होने वाला है, राग उत्पन्न होने वाला है। समस्या का प्रयोजन राग की उत्पत्ति नहीं है। समस्या शास्त्र का प्रयोजन पर्याय का लक्ष्य कराना नहीं है। समस्या का प्रयोजन पर्याय और गुण भेदों को गौण करके त्रिकाल परिपूर्ण ज्ञान दर्शनमय शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य कराना है। तो यहाँ कहा कि संयम लब्धि का स्थान हो, वो सब जीव में नहीं, यानी जीव के स्वभाव में नहीं।
कारण के रीजन क्या बताया, कारण क्या दर्शाया कि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से ये संयम लब्धि का स्थान है, वो तो जीव की पर्याय की आंशिक शुद्धता है। फिर भी टीकाकार आचार्य ने उसको पुद्गल कहा। क्यों पुद्गल कहा? तो कि जैसा पुद्गल पर दृष्टि रखने से जीव के परिणाम में शुद्धता प्रकट नहीं होती है, उसी प्रकार संयम लब्धि के स्थान रूप जो परिणाम है उसका भी लक्ष्य करने से परिणाम में शुद्धि प्रकट होती नहीं है। उस अपेक्षा से संयम लब्धि स्थानों को आचार्य भगवान ने पुद्गल बताया। दूसरा, जब संयम लब्धि का स्थान उत्पन्न होते हैं यानी चारित्र गुण की शुद्धता प्रकट होती है, तब चारित्र मोहनीय कर्म का अभाव होता जाता है। तो जो संयम लब्धि का स्थान है उसमें कर्म के अभाव की भी अपेक्षा है, और जितना चारित्र मोह उत्पन्न होता है, जितनी अशुद्धि रहती है, वो अशुद्धि तो कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न हुई। तो जो परिणाम में अशुद्धि उत्पन्न हुई कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न हुई, इसलिए वो परिणामों को भी पुद्गल कहा। ख्याल में आता है? कारण કે તે પુદ્ગલ દ્રવ્યના પરિણામમય હોવાથી અનુભૂતિથી ભિન્ન છે। સ્વાનુભવ થયો એટલે શું? સ્વાનુભવ, સ્વનું અનુભવન, સ્વને જાણવો એને પણ અનુભૂતિ કીધી છે, અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખ પ્રગટ થવું એને પણ અનુભૂતિ કીધી છે। તો જ્ઞાન, અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું। એ જ્ઞાને સંયમ લબ્ધિના સ્થાન છે, એ પરિણામની શુદ્ધતા છે આંશિક। એ શુદ્ધતાના કાળે જ્ઞાનની પર્યાય પણ નિર્મળ થઈ છે, અને ભાવશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે। તો અનુભૂતિના કાળે જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, એ જ્ઞાન જ્ઞાયકને જાણે છે। તો કે એને જ્ઞાયકને કેવો જાણ્યો? તો કે જ્ઞાયક તો અભેદ છે, જ્ઞાયક તો ભેદ રહિત છે, જ્ઞાયક તો ગુણભેદથી રહિત છે, જ્ઞાયક તો ગુણોની પર્યાયથી પણ ભિન્ન છે, ગુણભેદથી પણ ભિન્ન, પર્યાય ભેદથી પણ ભિન્ન,
તો સંયમ લબ્ધિ છે એ તો ચારિત્ર ગુણની પર્યાય છે, પણ જ્ઞાનીએ અનુભૂતિના કાળે જે એનું જ્ઞાન પ્રગટ થયું અને એ જ્ઞાને જ્ઞાયકને જાણ્યો, તો કેવો જાણ્યો? તો કે મારો જ્ઞાયક તો સંયમ લબ્ધિ સ્થાનરૂપ પરિણામ છે, એ પરિણામથી રહિત છે. માટે એમ કીધું કે અનુભૂતિથી ભિન્ન છે. દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર પડી, દ્રષ્ટિ સંયમ લબ્ધિના સ્થાન ઉપર નથી. દ્રષ્ટિ તો જ્ઞાયક ઉપર જ છે. તો આચાર્ય ભગવાન આ સંયમ લબ્ધિના સ્થાનોને પણ એનું લક્ષ છોડાવીને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરાવીને જ્ઞાયક સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ મુકાવીને શુદ્ધતા પ્રગટ કરાવવા માગે છે. હવે 28 નંબરનો બોલ. પર્યાપ્ત તેમજ અપર્યાપ્ત એવા બાદર અને સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રી, બેઇન્દ્રી, ત્રણેન્દ્રી, ચારેન્દ્રી, સંજ્ઞી તથા અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય જેમના લક્ષણ છે એવા જે જીવ સ્થાનો તે બધાય જીવને નથી. શું કહે છે? क्या कहते हैं? जीव का प्रकार, उसमें 7 प्रकार बताया. कोई जीव बादर है, कोई जीव सूक्ष्म है, कोई जीव एकेंद्री है, बेइंद्री है, त्रण इंद्री है, चार इंद्री है, पंचेंद्री मन के सहित है और मन से रहित है. तो जो ये 7 प्रकार का जीव कहा, उसमें और 2 प्रकार बताया. दो प्रकार क्या बताया? कि बादर जीव पर्याप्त और अपर्याप्त हो सकते हैं. सूक्ष्म जीव पर्याप्त अपर्याप्त हो सकते हैं. एकेंद्रीय जीव पर्याप्त अपर्याप्त हो सकते हैं. तो सभी में 2-2 प्रकार, ऐसा 14 प्रकार. ये 14 स्थान कि वहाँ जीव का रहने का स्थान. उस विषय में आगे कल चलेगा, समय हुआ है. वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी श्री महावीर भगवान नो जय हो. महाविद्य क्षेत्रे बिराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर
અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા, પ્રચુર સંવેદન કરનાર, આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે જીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવ ભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.